We're talking about the lean production techniques, and talking about the lean production techniques, we have moved to technique that is called Kaizen. Kaizen is a Japanese word, a Japanese technique, the right word is. And the term Kaizen exactly means continuous improvement. But so there is a strong link between the Kaizen and the lean production techniques. That strong link uh, leads us. Give me a second, kids. I was saying there is a strong link between the lean production techniques, I mean the waste management techniques, and the Kaizen. There is a belief that whatever we are doing right now, we can improve it further. We can make it better. That belief is basically called Kaizen. The Japanese believe that there are always chances of smaller, short improvements that can improve the overall performance of the work. It means that the workers are always coming up with the ideas to improve the quality, improve the standards, to reduce the wastages. We must accept those ideas with the ideas workers are coming with. हमें उनको पूछना चाहिए, and if they give the feedback about they are the best judge, they always give the right feedbacks, and it always make huge impact on the business. So in Japan, this is very common that people know. In the US too, people mean the employees come up with the new ideas, and it becomes the new ideas become the part of the culture of the business, because they know that if the workers are suggesting something, it means that it is important and we should implement that. That is the concept behind the Kaizen, basically, where we are involving the workers into the process and we are appreciating the things that worker are doing. Okay. What Kaizen does with us if we implement the Kaizen inside the business organization, and how it does, we'll study that too. Okay. Kaizen reduces the waiting times before starting time. Starting a project. It means that, for example, if workers are waiting for raw material to arrive and they're just waiting and doing nothing, Kaizen can eliminate that task, that delay. Kaizen reduces the unnecessary movements from one production place to another. For example, walking to a central point in the factory to get tools. It will waste the time. You make the tools available to them at the right place. We'll study that a bit. So Kaizen reduces the time wastages. In searching of tools, for example, movement time, for example, from one place to another. Kaizen also reduces the irregular use of a machine. So we talk about the Kaizen. Kaizen is about building a culture in which employees. Kids, give me a minute. Okay, kids, before Azan, I was saying that Kaizen reduces the irregular usage of machinery. And I was saying that Kaizen actually builds a culture in which employees are actively involved in suggesting and implementing the improvements.
ये वो कल्चर है जो एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करता है, और फिर उन 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 इम्प्रूवमेंट्स को जो एम्प्लॉयज ने सजेस्ट किया होता है वो इम्प्लीमेंट इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. The companies that are called truly lean companies are those that implement the lean productions in the organization. So in companies that are called lean companies, it becomes natural way of thinking for both managers and factory workers. They they focus on whatever employees are coming with, and they are implementing inside the organization. For this Kaizen, what we do in the organizations, the idea of 5S. First is called sorting. What is this sorting? Sorting is getting rid of the clutter at the workplace. Getting rid of clutter at workplace. What we do, we place only necessary tools there. We store only necessary things at the workplace. Unnecessary things that are not being used right now, for example, they'll be used after a month or something like that, they are removed from the workplace. So any excessive inventory जो कि वहां पे जरूरत जिसकी राइट नाउ नहीं है उसको हम नहीं रखते. दो, गेटिंग रिड ऑफ द क्लटर, दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. द सेकंड थिंग दैट वी डू इन लीन प्रोडक्शन इज सेटिंग इन ऑर्डर्स. हमने कहा कि वर्कर्स को बाज दफा मूव करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज द वर्क एरिया सो दैट इज इजी टू फाइंड व्हाट इज नीडेड. हमें मूव ना करना पड़े, भागना ना पड़े. Organize the work area so that it is easy to find what is needed. See, shine. Third S, ensure that work area and equipments are clean, make them shine. Uh, I visited to a factory recently and they have moved one step further. The tool that the labor has to use right now, उस वक्त जो उसने इस्तेमाल करना होता है उसके नीचे लाइट जल रही होती है ताकि उसको ये फाइंड आउट ना करना पड़े कि मुझे कौन से वाला टूल अभी उठाना है. वो वही वाला टूल उठाता है और उसको उसी वक्त वो यूज कर लेता है. Then we have another S that is called standardize. That is basically when the most effective working practices have been identified, everyone in the workplace should adopt them. And then fifth S, the last S that we have is called sustain. Sustain is basically adopt a system to lock the other four S जो हमने पढ़ लिए. Adopt a system to lock other four S. ये जो हमने पढ़े कि sorting, setting in order, shining and standardization into the way people work at all times on a permanent basis.
This was the concept of Kaizen. Once Kaizen is opted inside the organizations, uh, it's likely to create certain positive situations, certain positive principles and practices for the organizations. What are those positive practices and impacts? First of all, the standardization. Everyone would be working at the same pace, at the same rate, with the similar characteristics and with the similar practice methods. So standardization would mean that we are carrying out every business activity according to the established formula that will create equity and equality. This formula, sometimes again, I visited a Honda factory recently, and I've seen that the practices have been printed and they have placed on every wall. Sometimes they are hanged, उनको बैनर्स की शक्ल में हैंग किया जाता है. तो इससे क्या होता है, द डेवलप इनटू स्टैंडर्ड्स फॉर द बेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट एंड सेफेस्ट वे टू कंप्लीट द जॉब्स. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो सेफ्टी के भी बड़े इश्यूज होते हैं, तो फिर आप उनको फॉलो कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट. The product that is being produced, the product is of same quality, same size, same variant. Another thing that has been developed with the help of Kaizen in the or inside the organizations, that is basically team working. जो कि काइजन को प्रैक्टिस करते हैं लीन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मैंने नाम लिया, उन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टीम स्पिरिट्स डेवलप होती हैं, लोग मिलके काम करते हैं, क्योंकि हमने जब स्टैंडर्ड्स तय किया तो हमने कहा ये काम इसका, ये इसका, और ये वाला मिलके करना है, मिसाल के तौर पे. Again, taking the example of another factory that I recently visited, जहाँ पे हमने देखा कि एक ऐसा काम जो 300 मिनट्स में कंप्लीट होना था, उसमें कोई 200 वर्कर इन्वॉल्व थे, एंड दे वर कलेक्टिवली डूइंग जॉब्स विद परफेक्टली फाइन वे, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरा एरिया है और इस पे मुझे दूसरे बंदे ने यहाँ तक सपोर्ट करके देना है. As a result of team working, the flexibility of the organization improves. Because in the teamwork, if someone is not working or absent or something like that, another can take place of that. Teams can schedule their work in their own way that can benefit the organizations. Can improve communication and labor relationships, etc. Kaizen is also associated with the team working, with the empowerment of the workers. What empowerment does, empowerment gives employees the control of their own work. This is the starting point of our Kaizen, that we're allowing worker to participate into the decision making process that is most probably relevant to them, and sometimes they're bringing up their own ideas to the business. So what happens in the अगर कोई वर्कर सिर्फ पास्ट में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहे थे और अब आप उन्हें डिसीजन मेकिंग का राइट दे दिया, तो दे विल फील मोटिवेटेड. Or if they are given authority, they can solve the problems with more creativity inside the organizations. Or with the help of Kaizens, we have suggestion schemes that can help us to improve the organization. So this was the concept of Kaizen in the organizations, and as a result of this Kaizen, we know that there are certain benefits. Some of them I have written there. लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हमने काइजन इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हमें कुछ चीजों पर एक मस्ट डू चीजें हैं फॉर द काइजन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ चीजें हैं जिनको ऑप्ट करना बहुत ही जरूरी है इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द काइजन. एक तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्कर्स है. मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखें.
दूसरा है मेकिंग ऑफ टीम्स, क्योंकि हमने कहा कि काइजन का अल्टीमेट एम्स ही मेकिंग ऑफ टीम्स है। तो हमें टीम्स में डिवाइड करना है जिसमें हमें ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना है जो कि लर्निंग भी करना चाहते हैं और जो लर्न भी हों। और हमें एक और काम भी करना है कि वो सैलरी स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ काइजन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय इंप्रूव्स और दे एक्सपेक्ट हायर सैलरी। जाहिर है अगर उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो फिर हमें उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना ही चाहिए। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, काइजन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं कह सकते कि सारी चेंज ग्रेजुअल यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हमें कुछ तो करना ही पड़ता है। समटाइम्स सम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे हमें बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से चीज़ों को चेंज करना पड़ जाता है। तो वहाँ पे फिर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू चेंज द एंटायर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट टू शिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कल्चर टू अ न्यू कल्चर दैट इज बिल्कुल एंटायरली न्यू। तो फिर हम शायद हम वहाँ पे काइजन अप्लाई ना कर सकें। समटाइम्स इन द काइजन सीनियर मैनेजमेंट रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं कि क्यों वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको अपनी जो अथॉरिटी है वो खतरे में पड़ती हुई महसूस। Yes, inertia is a good term. That is problem of the workers basically, लेकिन basically okay. तो अगर genuinely empower करें ही senior management तो then only it is possible that Kaizen implement organization में हो सकता है। अगर वो ना करें तो शायद implementation of Kaizen inside the organizations will not be possible. Okay. Increase in the at least short term costs. वो तो इंक्रीज बहरहाल ऑर्गेनाइजेशंस की हो ही जाती हैं, लॉन्ग टर्म में चलो अगर कम भी हो जाए। तो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ द काइजन दैट कैन हैपन। और फिर एम्प्लॉइज की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, कुछ लोग चेंज को नहीं भी पसंद करते हैं। अभी जिसका नाम इनर्शिया हसन अमीर ले भी रहा था। ओके जी, दिस इज द डिटेल ऑफ काइजन, उसके पॉजिटिव्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, नेगेटिव्स, एवरीथिंग।